Hello students, welcome back to class 11 mathematics class, that is revision class. In the last class we have discussed about power set of any set. Today we will see the diagrammatic representation of sets, the operation of sets and the word problems and some laws like De Morgan's law, like that. First I will explain you how we can represent sets in diagrammatic form. In diagrammatic form, we can use Venn diagram to represent any set that I had told in the previous classes. Venn diagram से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें यूनिवर्सल सेट जो बेसिक सेट है उसको यू लेते हैं. स्मॉल सर्कल विल रिप्रेजेंट द सेट्स एज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, स्मॉल सबसेट्स को सर्कुलर फॉर्म से डिनोट करते हैं. नाउ व्हाट आर द ऑपरेशन ऑफ सेट्स? फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स. डू यू रिमेंबर? A union B is a set X such that X belongs to A or X belongs to B. The word or is very important. That means if you are taking union of any two sets, the union must contain all the elements of both the set. Next one is intersection. Intersection is denoted by symbol A intersection B. It's a set X such that X belongs to A and this word is important. X belongs to B. For I am giving you an example. If A is set 1, 2, 3, B is set 2, 5, 6, then A intersection B. See, A intersection B में क्या आ रहा है? सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है. So that A intersection B is 2. Now A union B सारे लेना है. इसमें 1, 2, 3 है. 2 times आ रहा है, but we have to take only once. 1, 2, 3, 5, 6. That is the union. Next one is, what do you mean by complement of a set? Complement of a set. If A is any set, then complement of A is denoted as A dash. A dash is the set X such that X belongs to U. U means one set, and X does not belongs to A. Example, if I am taking U is equal to the set 1, 2, 3, etc. up to 10, and I am taking the set A is 1, 2, 3, 4, 5. Then A dash मतलब U में होना चाहिए, A में नहीं होना चाहिए. और A में 5 तक आ रहा है, बाकी कितना बच रहा है? 6, 7, 8, 9, 10. In this way, you can find complement of any set. Now, difference of any two set A minus B is the set X such that X belongs to A and X does not belongs to B. A में होना चाहिए, B में नहीं होना चाहिए. यहाँ मैंने A ये ले लिया, B में ये ले रही हूँ 4, 5, 6. Now see A minus B. B में नहीं होना चाहिए, A में होना चाहिए. B में 4, 5 आ रहा है, तो बचता कौन सा है? A minus B is 1, 2, 3. These are the operation. Now what are the properties related to operation of any sets? First property is, I am telling first about union. Union में first property है commutative property. A union B is equal to B union A. Second, A union A is equal to A. कोई भी सेट के साथ उसी को आप यूनियन लगाएंगे तो वो ही एलिमेंट आएगा. उसको कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ. पिछले क्लासों में मैंने बोल रखा है. थर्ड वन इज A यूनियन फाई इज इक्वल टू A. फोर्थ वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B union C. These are the properties related to union. Next, intersection. What are the properties related to intersection? The intersection, first one is like this. A intersection B is equal to B intersection A. This is again commutative property. Commutative. Next one is, second one is A intersection A is A. That is idempotent law, like this one. Third one is A intersection phi. A intersection A is equal to A. That is, 1 minute. A intersection, that is idempotent law. A intersection phi क्या होगा? Intersection में छोटा सेट आता है, यूनियन में बड़ा सेट, that is phi. Fourth one is
A intersection B intersection C, that is associative law. A intersection B intersection C. आपने इधर फर्स्ट इसको इंटरसेक्ट किया, सेकंड में फर्स्ट को टू को करके सेकंड को थर्ड को बाद में कर लिया. दिस इज एसोसिएटिव, आइडेम्पोटेंट, commutative, like in this one. Now one more property is there, that is distributive property, that is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. This property is known as distributive property. Distributive property. Similarly, what is the opposite of this one? A intersection B union C. पहले यहाँ यूनियन फॉर इंटरसेक्शन लगाया, आप जस्ट ऑपोजिट लेंगे, दैट इज A intersection B union A intersection C. These both the properties are known as distributive property, like the properties of in the case of addition and subtraction, in the case of multiplication and addition, yeah, multiplication and subtraction of any numbers. Now next one is, what do you mean De Morgan's law? What do you mean by De Morgan's law? Before that, among A union B and A union B और A के बीच में कौन बड़ा होगा? यूनियन बड़ा होगा और इंटरसेक्शन छोटा होगा. You can write A union B superset of A or A is subset of A union B. Next, A intersection B और A में कौन छोटा होगा? This is the smallest one. Union is the biggest one and intersection is the smallest one. That is A intersection B is subset of A, or A is subset of A, or A intersection B is subset of B. That is B is superset of intersection B. Intersection में हर एक सेट superset होगा, union में हर एक सेट subset होगा. Next one is, I told you, complement. Now complement में एक law है, if you take 2 times complement of any set, you will get the same set itself. Next one is De Morgan's law. What do you mean by De Morgan's law? I told you, and I know you all know it very well. We are just doing revision. In this law is known as De Morgan's law because it is derived by the famous mathematician De Morgan. First law is A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash. Just to opposite लेना. Similarly, A intersection B whole dash is equal to A dash union B dash. These two properties you have to use to prove theoretical questions in which you are asked to prove the given result using the properties of sets. अच्छी तरह ध्यान रखना, 2 तरह के क्वेश्चन आता है. Prove the result using properties or simply prove the result. If you are asked to prove the result, simply you have to use arbitrary method that you have done. How? In order to prove that 2 sets are equal, first you have to prove A subset of B, next you have to prove B subset of A. If A is subset of B, B subset of A, that is implies and implied by if and only if A equal to B. एक केस हो सकता है, हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट फर्स्ट सेट में से लेकर के सेकंड सेट में पहुंचाया, फिर उसको इसका सबसेट प्रूफ किया था. You remember, otherwise you just go through the previous videos. Similarly, यहाँ से एक y एलिमेंट लिया था, यहाँ पहुंच करके वापस एक दूसरे का सबसेट बना करके इक्वल प्रूफ किया. प्रॉपर्टी पूछेंगे तो प्रॉपर्टी ही यूज करना है. प्रॉपर्टी में A डैश होल डैश इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश. Now one more formula is there. A minus B can be written as A intersection B dash. And symmetric difference between 2 sets is denoted as A delta B. This is known as delta. A minus B union B minus C. अब हमको देखना है ये सबको ऑपरेशन को वेन डायग्राम्स में कैसे डिनोट करते हैं. फर्स्ट आई एम टेकिंग यूनियन. यूनियन इसमें यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल हो गया, ये आपका 2 सेट्स आ गए. A यूनियन B मीन्स सब आना चाहिए, तो पूरा शेडेड रीजन, दैट इज A यूनियन B. A इंटरसेक्शन B में क्या होगा? यूनिवर्सल सेट आ गया. इंटरसेक्शन मतलब बीच का कॉमन, दैट इज दिस इज A इंटरसेक्शन B. और A डैश मीन्स दिस इज A. A में नहीं होना चाहिए, बाकी U में है, दिस इज A डैश. A माइनस B मीन्स A माइनस B.
ए में होना चाहिए, बी में नहीं आना चाहिए, मतलब ये पोर्शन दोनों में कॉमन आता है, तो दिस पोर्शन विल गिव यू a minus b. Similarly, two topics are remaining so that we can complete the chapter. We are taking the case of three sets. For that you have to draw the rectangle in a big size. We are taking the case of three sets A, B and C. B and C. Now A intersection B intersection C will give you this part. A intersection B intersection C. A intersection B intersection में देखिए ये इस पार्ट में भी आ रहा है, इस पार्ट में भी आ रहा है, इस पार्ट में भी आ रहा है. अब A इंटरसेक्शन B कौन सा पार्ट आएगा? सिर्फ इतना आएगा और ये पार्ट आएगा. और A इंटरसेक्शन C मतलब कौन सा आएगा? ये पार्ट आएगा. B इंटरसेक्शन C मतलब कौन सा पार्ट आएगा? देखो B और C ये कौन सा? ये पार्ट आएंगे. तीनों में A इंटरसेक्शन C इज दिस वन, A इंटरसेक्शन B इज दिस वन, B इंटरसेक्शन C इज कौन सा? आप देखिए, देकर बताइए. B इज दिस वन एंड C इज दिस वन. इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है. तो तीनों में कॉमन ये आ रहा है. ये इस तरह का वेन डायग्राम आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज करना, जहां थ्री सेट्स आपको दिए होंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट इज लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट formula based on number of sets of a number of elements of a sets. First one is n a union b. N means cardinal number of elements is equal to na plus nb minus na intersection b. What do you mean by disjoint set? Disjoint sets means no element have कोई join ही नहीं है. इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? A intersection B equal to 5, so that n A intersection B becomes 0. If the sets are disjoint, then n A union B equal to n A plus n B. Second formula is n A minus B. n A minus B को कैसे लिख सकते हैं? आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम आए सेट्स में, आप वेन डायग्राम से इसको प्रूव करना. n A minus n A intersection B. इसी तरह NB minus A can be written as NB minus NA intersection B. Now, what is the formula for finding union of three sets? NA union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C, B intersection C minus NA intersection C plus N A intersection B intersection C. Exactly one of two sets A B C मैंने आपको बता रखा था, आपको याद एक नहीं पता नहीं. Exactly में आप क्या करेंगे? N A intersection B plus N B intersection C. Let me check. Exactly. One means NA plus NB plus NC minus 2 NA intersection B minus 2 N intersection B, sorry B intersection C minus 2 NA intersection C plus 3 NA intersection B intersection C. वो आपको मैंने उस टाइम वीडियो में भेजा है, वापस आप एक बार चेक कर लेना. लास्ट वन इज N A dash union B dash is equal to N A dash union B dash can be written as A intersection B whole dash by De Morgan's law. This can be written as Nu minus Na intersection B. And last formula is N A dash हो गया, union हो गया, अब intersection A dash intersection B dash is equal to by De Morgan's law and A union B whole dash. And A union B whole dash can be again written as Nu minus Na union B. These are the formula that we can use in word problem, but at the time of the teacher, when we have studied these questions, I repeatedly reminded you it is better to use Venn diagram to solve practical problems of sets having either two sets or more than three sets. It will not take so much time and it will not get you confused. These are the topics, remaining topics that we have gone through of the chapter, letter to the chapter, and in this way that means we have completed the revision part of the whole chapter sets, and you can revise again. And the next topic that is common for science and commerce student is relation and function, that we will learn in the next class. And you ready for the test, and the date of the test I will let you know later. And the topic is only sets.
Thank you very much and see you again in the next class.